students. Now in this session we learn about story sums of related mango. Okay, how many mangoes we are using and how the payment we have to give. Here the story, first understand story. Whenever any word problem or any story sums given, one sentence you have to understand first. Okay, let's start. 3 kg mangoes are consumed at Dinkle Bhai's home daily in summer. Mango season is always in summer season, right? So see the sentence. 3 kg mangoes are consumed. कितनी mangoes use होती है? 3 kg. At Dinkle Bhai's home daily. Every day 3 kg mangoes use होती है. Okay? If the cost of 1 kg mango is rupees 80. Okay, here they are using every day 3 kg mangoes. Every day, one day, कितनी mangoes use होती है? 3 kg. Okay? And 1 kg mango की price क्या है? rupees 80. Okay? Then how much money does he spend daily for mango? 1 kg mango की प्राइस 80 रुपीज है. 3 kg मैंगोज पर डे यूज होती है. सो कितने रुपीज की मैंगो एक दिन में होती है? सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर हियर विद द कलरफुल chalk. See how much money does he spend daily for mango? Okay, so per day how many mango they are using? 3 kg, right? 3 kg multiply with what the rate of 1 kg mango? 80 rupees. 1 kg mango's rate is 80 rupees. So 3 kg mango की कितनी होगी? So 80 multiply with 3. Okay, 80 rupees is the cost. Now see, I am going to teach you how to multiply horizontally. Okay, first of all 3 exa. Here multiplication, so table of 3 exa. 3 exa 24 and this 0 we have to put here. So how many rupees paid for 3 kg mangoes? 240. Okay, this one is the first answer. 240 rupees. Okay, 240 rupees paid for 3 kg mango whichever used in per day. एक दिन में 3 kg मैंगो यूज होती है तो उसके लिए कितने रुपीस पे करने हैं? 240. ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड दिस स्टोरी. हाउ मच मनी does he spend in 1 week? एक दिन में कितने रुपीस खर्च होते हैं? 240 रुपीस, राइट? 1 day how much rupees they have to pay? 1 day how much rupees? 240 rupees. Okay, 240 rupees. Here 1 week. 1 week means 7 days, right? 1 week means 7 days. I write here 1 week is equal to 7 days. 1 day how much rupees they have to pay? 240 rupees. So for 7 days, एक दिन के लिए 240 रुपीज यूज कर रहे हैं तो 7 डेज के लिए कितने रुपीज यूज करेंगे? लेट्स काउंट. 240 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. ओके, 240 multiply with 7 and here 1, right? 1 day they paid for mangoes 240 rupees. For the 7 days how much rupees they have to pay? So 240 multiplied by 7. Now multiplication, 240 multiplied by 7. Let's start how to count the multiplication sum.
7 zeros are any number multiply with 0, answer getting 0 for this number only. Okay, whichever number, जो भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका 0 ही होगा. ओके, जो भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो उसकी प्रोडक्ट ऑलवेज 0. So 0 7s are 0. Whenever you write the number, write on ones place, second place, okay, third place. So ones, tens, 100 like that you have to write. Now 7 fours are or 4 sevens are, whichever. 28. So write here 8 and 2 can. Okay. Now 7 twos are 14 plus 2 16. So how much rupees they have to pay for 1 week? For the 7 days they have to pay rupees 1680. Okay. What the question? How much money does he spend in 1 week? So answer is in 1 week they paid rupees 1680. Okay. I write here answer in sentence form. He paid rupees 1600 for a week. Right? एक वीक के लिए कितने रुपीस पे किए? 1680. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. How much money does he spend in 1 month? Here they are given hint. Consider 30 days. For what? 1 month. Here they are given for week and here 1 month. Okay. 1 day के लिए 240 रुपीस पे किए. 7 days के लिए 1680 रुपीस पे किए. Now how many days? 30 days. Right? Per day कितने रुपीस पे किए? 240. So I write here for the 1 day how many rupees they have to spare? Sorry, 240 rupees. Right? Per day 240 rupees they paid for the mangoes. So how many days now? Here we have to count 30 days. For the 30 days how much rupees they have to pay? So here again cross multiplication. So 240 multiplied by 30 and then 1. Now multiply these two numbers. Okay, 240 multiply with 30. Let's start. First multiply ones number on this all number. Okay, ones place 0. Any number multiply with 0, what we are getting? 0. Okay, so 0 zeros are 0, 0 fours are 0, 0 twos are 0. Right? Now cross this number because multiplication done of this number. Whichever number we cross, put the 0 of that number. Why? Because now we are going to on tens place. दूसरे नंबर पे जा रहे हैं. राइट? सो उसके पीछे वंस प्लेस है, उसका क्रॉस कर दिया. 3 zeros are 0. See all the number I write in one order, right, in one line. Now 3 fours are 12. Carry 1. 3 twos are 6 plus 1 7. Now add this number. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 2 2 and here only 7. So for the month how many, 1 month के लिए कितने रुपीस पे करेंगे? How much money they have to pay for a month? 7,200. Okay, so I write the answer here. He paid rupees 7,200
per day they are using. Okay, उनके घर पे every day 3 kg मैंगो यूज होती है. If the cost of 1 kg मैंगो की प्राइस क्या है? 80 rupees, right? 1 kg मैंगो की प्राइस है 80 rupees. So 3 kg मैंगो की कितनी होगी? 80 multiply with 3 kg. So 8 3s are 240. ये पर डे उनका एक्सपेंस है. पर डे वो 240 रुपीज के मैंगो खा जाते हैं. नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज दे स्पेंड इन 1 वीक? एक वीक के लिए कितने रुपीस खर्च करे होंगे? सो 1 वीक के कितने डेज होते हैं? 7 डेज. 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. नाउ 1 डे हाउ मच रुपीस दे हैव टू पे? एक दिन के लिए कितनी मैंगोस कितने रुपीस के मैंगो लाते हैं? 240 रुपीस. और यहाँ हमें 7 डेज का एक्सपेंस ढूंढना है. ओके, सो 7 डेज में कितनी मैंगो कितने रुपीस की मैंगो लाते होंगे? सो 240 मल्टीप्लाई विथ 7. आई राइट हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 240 मल्टीप्लाई विथ 7. ओके, सो नाउ हाउ मच रुपीस दे हैव टू पे फॉर 1 वीक? 1680. Okay, for a 1 week. Now here the another question for a month. एक महीने के लिए कितने रुपीस खर्च होंगे? 1 डे का 240, 7 डेज का 1680. So 30 days के, because here they are given consider 30 days. In month there are 30 and 31 days, right? But here they have given hint. यहाँ पे हिंट दे रखी है कि आपको 30 डेज कंसीडर करने हैं. सो 1 डे का कितना यूज किया है? 240. सो फॉर द 30 डेज हाउ मच रुपीस दे हैव टू पे? सो 240 मल्टीप्लाई विथ 30. सो हियर द सम, हाउ मच रुपीस दे हैव टू पे? 7200. सो फॉर अ मंथ दे हैव पेड 7200.